Hello there everyone, this is Ashmita from Saurabh Sir's classes. Here we are going to solve questions from the Civil Services Examination. इस साल का जो पेपर है वही से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इसी तरह के कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है हमारे क्लासेस के बारे में। कॉन्टैक्ट नंबर से लेके डाउट क्लियरिंग सेशंस के बारे में सभी डिटेल्स दिया गया है। आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं so that we can provide you with live lectures, study materials, doubt clearing sessions, mock tests and all the other facilities that you need to ace well in your exams. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू really want to know something, then you can post down your comments below in the comment box. चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 31 फॉर टुडेज क्लास। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है लीगल प्रिंसिपल दैट इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज. So this encompasses various aspects, including procedural safeguards and protection of individual rights. Now, while different legal systems are there, which may have variations in their interpretation and application, the essence of due process is to provide a fair and just legal process. ठीक है? That is the actual meaning of due process of law. मतलब कि फेयर और एक जस्ट लीगल प्रोसेस आपको दिया जाए, आप उसमें से मतलब अपने जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिल जाए, तो वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है in essence what does due process of law mean? Okay, we just need to select what is due process of law. So yes, we are going to select the principle of natural justice. तो यही हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, उसी को ही हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं. ठीक है? लाइक safeguarding the individual rights, protection of the individual rights, यही नॉर्मली होता है नेचुरल प्रोसेस ऑफ acquiring justice के अंदर. ठीक है? तो yes, this is your correct answer. And this principle of natural justice के अलावा आप C भी चूज कर सकते हैं. ओके, दैट इज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, क्योंकि ये दोनों ही सेम टाइप का ही पॉइंट्स हो रहा है, सेम टाइप ही डिस्क्राइब कर रहा है. तो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ both capture the important elements of the due process. लेकिन अगर हम कुछ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस नॉट ओनली provides natural justice but also provides procedural safeguards and also protects the individual rights. Okay, so दोनों ही आएगा. Therefore, the most encompassing answer would be the fair application of law. It would be best that you go for C, or you can also go with the A and C both. Okay. Next question. Consider the following statements. पहला statement है, in India prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of the prisons. तो स्टेटमेंट 1 यही कह रहा है. तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन इंडिया prisons are managed by the state governments with their own rules and regulations, and that is done like own rules and regulations for the day-to-day administration. Now this statement is obviously correct. I am putting a tick over here. ये correct है, as each state in India has its own prison rules and regulations, okay, governing the management of the prisons. So definitely each and every state has its own rules. So definitely this one is correct. Each state government has its own rules. Second statement, that is statement number 2. In India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. The statement number 2, this one is incorrect. Okay, so I'm putting a small crossover here. Statement number 2 is incorrect, as the Prisons Act of 1894 was enacted by the British colonial government
and it governs the administration of the prisons in India. However, after independence, मतलब 1947 के बाद क्या हुआ? The subject of the prisons became a state subject. Okay, under the Constitution of India. Now this governing thing of prisons is coming under Constitution of India, and each state, as I have said in the first statement, each state is responsible for the administration of its own prisons. So second one is wrong, first one is correct. Okay. तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन जा रहा है? स्टेटमेंट 1 is correct, statement 2 is incorrect. So this C is going. Okay. Next question. Question 33. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे या फिर कौन सा पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है चीफ पर्पस, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करते हैं एंड लिमिट करते हैं पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट को. ठीक है, तो कोई यहाँ पे राजा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको रूल्स फॉलो करने हैं, उस हिसाब से आपको जाना है. ठीक है, सो व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. What is its main purpose? Its main purpose is to define and allocate the powers to different branches of the government, to establish the rights and freedom of the citizens, and also to set the limits and constraints on the exercise of the governmental authority. ये है इसका काम. Constitution serves as a fundamental law that guides the functioning of the government and protects the rights and also interests of the people. ठीक है. Now, while it may also encompass the objectives for making necessary laws and creating political offices, its primary focus, Constitution का जो primary focus है, is on defining and limiting the powers of the government to ensure a system of checks and balances and also protect the individual liberties. तो कोई लिमिट से ऊपर ना जाए, एक लिमिट के अंदर रहे, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो गवर्नमेंट हो. यही देखरेख का जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स में. ठीक है. Okay, so that was it for today's class. We would be discussing more about these kind of questions in some other classes. For that, you can follow our channel because the next set of videos will come like in order. So yeah, you can follow. And if you have any questions, to post your questions in the comment box below. And if you want to enroll in our classes for any kind of entrance exam preparation or any kind of competitive exam preparation, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.